Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad. Welcome to Century Press and Publishers. Dear students, I hope you are fine and you are enjoying your learning because we are learning very exciting things. So today I am going to learn you something more exciting. Okay बच्चों, आज का हमारा लेसन और भी exciting है. Okay, so let's see what we are going to learn today. This is a concept of singular and plurals. Dear students, this is a pen, right? You can say that this is a pen. And who can tell me ये कितने pens हैं? One. This is a pen. So हम इसको सिंगुलर कहेंगे बिकॉज ये एक है, एक चीज को हम सिंगुलर कहते हैं. एंड यू कैन सी दैट दीज आर पेन्स. कितने ज्यादा पेन्स हैं? लेट अस काउंट कि कितने हैं. 1 2 3 4 5. सो वी कैन से दैट दीज आर 5 पेन्स. तो जब हमारे पास एक से ज्यादा चीज होती है तो उनको हम प्लूरल्स कहते हैं. ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल. सो वी कैन से दैट दिस इज वन पेन एंड दीज आर पेन्स. तो जब हमने इसका सिंगुलर और प्लूरल बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? पेन पेन्स, पेन पेन्स. पेन इज अ सिंगुलर एंड पेन्स इज अ plural. Okay बच्चों, so let's see what we have on our page. So look at the picture. This is one apple and these are 3 apples. तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें सिंगुलर कौन सा है? Yes, one apple is a singular and 3 apples is a plural. Very nice. इसी तरह you can see that there is 1 star and there are 3 stars. So 1 is a singular and 3 is a plural. Similarly, 1 flower and 3 flowers. Singular and plurals. Look at your pictures. So अब आपने नीचे देखना है and you have to tell me कि इसमें से singular कौन सा है और plural कौन सा है. Yes, this one boy is singular and 2 boys are plural. Okay? इसी तरह 1 ring is a singular and 2 rings is a plural. Similarly, 1 cow जो कि एक अकेली cow है वो singular है और 2 cows एक plural है. Okay, now look at other side. We have 1 mug and we have 2 mugs. Mug and mugs. So mug is a singular and mugs are plural. Similarly, hens. Hen is a singular and hens are plural. Similarly, pen and pens. So pen is a singular and pens is a plural. Okay students, so now you understand. सिंगल थिंग को हम सिंगुलर कहते हैं और मल्टीपल थिंग्स को हम प्लूरल कहते हैं. ओके बच्चों, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस. आपने अपने सराउंडिंग से चीज़ें उठाकर सिंगल थिंग को बताना है कि ये सिंगुलर है और ज़्यादा चीज़ें जमा करके आपने अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को बताना है कि दीज आर प्लूरल. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. कीप लर्निंग. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.